Krishna, good evening and welcome all of you all for Saturday evening's Bhagavatam class. So we are right now on the first canto, second chapter. So let's revise a little on what we have done in the last few lectures. So who remembers? Let me see who were present in the last lecture. That's the biggest question. You were there, right? So what were we discussing? Later. हाँ चलेगा, लेट में जो लास्ट में वो बताते हैं. कौन सा ऋषि का स्टोरी? मैं तो स्टोरी बताते रहता हूँ. कौन सा ऋषि का स्टोरी? जिसको उसके डेथ के बाद हाँ, धुंधुकारी का स्टोरी. Then what else we discussed? Prabhuji, in this 17th verse, you discussed on Vidyunoti, which cleanses. Vidunoti means cleanses. See, verse number 17 clearly talks about Shrinvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtanaha Hridayanta Sthito hi Abhadrani Vidunoti Suhitsratam. What does this mean? Shrinvatam Swakata Krishna. खुद की कथा सुनने के बाद जो खुद की भगवान खुद का कथा सब सुनते हैं. So what happens? पुण्य श्रवण कीर्तन. How it is? It is पुण्य श्रवण कीर्तन. And then हृदयंत स्थितो ही अभद्राणी. हृदय के अंदर जितने भी अभद्र हैं वो साफ हो जाते. And what does he say? हृदयंत स्थितो अभद्राणी विदुनोति सुहृत्सतम. विदुनोति means special cleaning in the heart happens. And when that happens, जब भगवान खुद की कथा सुनते हैं तब आपके हृदय में जितने भी ग्रंथि हैं, जितने भी आपके अंदर अभद्र हैं, काम क्रोध लोभ सब, it all gets cleansed off. The next verse, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवतिर नैष्टिकी. See, this is a full set of 5 verses which we have to understand. इस वर्स का स्पेशलिटी मैंने पूछा था, अगर किसी को याद हो, कि नष्ट प्रायेषु. प्रायेषु मीन्स मोस्टली. फिर बाकी का क्या? बाकी का क्या? थोड़ा बहुत जो रह गया उसका क्या? भगवान के लिए क्यों यूज करना? मगर ये सब अगर पूरा साफ हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है? व्हाट इज रॉन्ग? अगर डिजायर ही खत्म हो जाएगी तो भगवान खुद पाने की डिजायर खत्म हो जाएगी. भगवान को सर्व करने की डिजायर खत्म हो जाएगी. प्रभु जी, यू आर राइट, वेरी मच राइट. Not very much, fully right. I have already explained earlier also. Like for example, हम लोग क्या बोलते हैं? मेरा शुगर हाई है, मेरा ब्लड प्रेशर हाई है. ब्लड प्रेशर 0 हो जाए तो कैसा रहे? ब्लड शुगर 0 हो जाए तो पॉसिबल है? आदमी जी सकता है? सो बेसिकली व्हाट डज दिस मीन? कि ये सब चीजें जरूरी है. द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ योर्स. अब बोलता प्रभु जी पल्स बहुत हाई है, तो पल्स हाई है तो पल्स नॉर्मल होना चाहिए. लो हुआ तो भी प्रॉब्लम, हाई हुआ तो भी प्रॉब्लम. शुगर इफ इट गोज डाउन देन ऑल्सो यू आर गोइंग टू फॉल अनकॉन्शियस. शुगर गोज वेरी हाई, यू आर गोइंग टू गेट एन अटैक और स्ट्रोक. सो यू हैव टू बी इन इक्विलिब्रियम. सो ऑल दिस, if you see in Ayurvedic point of view, kapha vata pitta, and these are the 3 things which have to be kept in equilibrium. अगर पूरी वात निकल गई, पूरी हवा निकल गई, आपके प्राण अपान समान उदान वयान 5 तरह का वात है, हवा है, वो पूरी निकल गई, then also you cannot survive. So everything has to be in equilibrium. So for that sake, little of काम क्रोध लोभ is kept inside. थोड़ा बहुत रख दिए हैं. But then that is supposed to be for the Lord, not for your personal basis. That is meant for the Lord. All that desire should be for the Lord. क्रोध कब आना चाहिए? हम लोग कभी आती है क्रोध आती है, अरे आज भक्ति नहीं किया, शे, I am very angry on myself. I have not done bhakti today. I have not done my chanting today. I have not done justification to my devotion service today. उस बात का क्रोध नहीं आता है. और किसका क्रोध आता है? अरे ये नहीं दिया भगवान, तूने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया. बस इस चीज का हमेशा क्रोध रहता है. मेरे पड़ोसी को दिया, मुझे नहीं दिया. तो those things, that is why it is said नष्ट प्रायेषु, almost is gone. There is extra unwanted is removed, but some impetus has to be kept. Otherwise you cannot live. Suppose you don't have any desire to even serve the Lord, you will not get up from the bed. अब बिस्तर पे लेटे रहोगे. अरे भाई उठो, भगवान की आरती उतारना है, भगवान का कुछ सेवा करना है.
तब आप देख, हाँ चलो उठता हूं मैं, गेट अप. Some impetus has to be there. So this is how cleansing happens with respect to by when you listen to Lord's Katha. Then the next verse, I think we stopped at this verse, right? तथा रजस तमस भाव काम लोभ आद्यश्चये चेत एतेर अनावित्तम सित्वम सत्वे प्रसीदति. What does this mean? तथा रजस तमस भाव काम लोभ आद्यश्चये. ये काम लोभ किसका है? रजो गुण और तमोगुण का, what do you say, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है. जो रजोगुण और तमोगुण में रहता है वो व्यक्ति का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ही विल ऑलवेज हैंकर फॉर मोर, लोभ और काम, डिजायर. सी, डिजायर डजंट मीन ओनली डिजायर फॉर ऑपोजिट सेक्स और ओनली फॉर मनी. काम कैन बी एंडलेस. व्हाट इज द एक्चुअल सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कामना? जो काम ना आना, जो काम ना आना वो है कामना. कुछ काम का नहीं है, जो कभी एंडिंग नहीं है. ड्रेस लिया, मेकअप सेट लिया, जूते लिए, ये लिया, वो लिया, कितना भी लो कम है. बिकॉज दैट इज कामना. जो काम कभी काम नहीं आने वाला है, और वो कामना है जो भगवान के लिए नहीं है, वो कभी आपको कुछ काम में आएगा नहीं. Whereas if you have कामना for Lord or for the service of the Lord, then you are blessed and lucky. कितने लोगों की ये कामना उठती है कल सुबह मंगला आरती को जाते हैं, कभी छोड़ना, बिस्तर में उड़ के और सो जाते हैं. That is what is required and that is missing. And what is not required वो भर भर के है. बहुत कामना है, मगर क्या है? बहुत ही कामना है, ना कि भगवान का सेवा का काम. So what happens? तथा रजस तमस भाव काम लोभ आद्यश्चे चेत एतेर अनावित्तम स्थित्वम सत्वे प्रसीदति. What does this mean? Without being affected, अनावित्तम, without being affected, स्थित्वम, स्थित हो जाते हो. किस में स्थित हो जाते हो? You get fixed in mode of goodness. And what is the characteristic feature of mode of goodness? You are always prasidati, satisfied and happy. That is the first feature of goodness, is one who is satisfied. नहीं तो दिल मांगे मोर. कितना भी रहेगा कम है, कितना भी दिया कम है. I always ask this question: do we deserve what we have already got? Are we fit for it? We should be thankful to God to what God has given us, but still we want to ask for something more. जितना दिया, अच्छा इतना ही दिया, ठीक है, अभी के लिए चलूंगा, बट नेक्स्ट ईयर मेरा जीडीपी बढ़ा देना. It's always the case. And मांगने में generally it is only asking for, it is generally asking for either for money or for desires which are meant for, what do you say, it's very simple way to understand is, the desires are endless. Desires are endless. But you know, spiritual desires are also endless. How many of us have got endless spiritual desires? Just a minute. 29. 29. So, you should have endless spiritual desires, but we'll end up with endless material desires. Okay, let me do this type of service. Let me read further. Let me get up in the morning. How many of you are using the actual papers which are given to you? What was the purpose of giving you these papers? So that you read the shlokas of Bhagavatam. ठीक है, भागवतम बहुत बड़ा है प्रभु जी, इतना हेवी है, कौन खोलेगा? ठीक है, मत खोलो, ये 4 पन्ने तो खोलो, हार्डली 10 pages, ये तो खोल के इन श्लोकस को पढ़ो. But still, we are so busy that we don't get time. And always I say, when you say, I am busy, then Krishna says, I am not easy.
If you say I am very busy, Krishna says I am also not easy, I am also busy. So this is very important. So you are in a state of prasidati, you are in a state of satisfied. When Vamandev was questioned by Bali Maharaj, कि भाई क्या मांग रहा है तुमसे? What did Vamandev ask from Bali Maharaj? Only 3 steps. 3 steps of land. बोला कि मैं चक्रवर्ती राजा और तुमसे 3 steps of land मांग रहा है. You can ask for one village or this and that. You can ask for n number of things. I can give you cows. I can give you brahmanas, wives, girls for marriage. Name it, I can give you. And you are foolish. You don't know how to ask. That time, Bali Maharaj says, Vamandev says very nicely, okay, one who is satisfied, one who is not satisfied with what comes, yadarcha upapanena, santushto vartate sukham, asantushto trivair loke, ajit atma upasaditer. What does this mean? कि यदृच्छा जो अपने आप आ रहा है, जो ज्यादा मेहनत नहीं करता, एफर्ट्स करना है. ऐसा नहीं कि अर्जुन ने युद्ध में एफर्ट्स नहीं किया. ही ऑल्सो फॉट द वॉर. आई डोंट से नो कल से नहीं, प्रभु जी ने बोला है मंडे से ऑफिस नहीं जाऊंगा, मैं घर पे बैठूंगा. नहीं, प्रभु जी ने बोला है ये अपने आप आएगा. अजगर नहीं, वो मुंह खुला रखेगा. अजगर सिट्स लाइक दैट. इट्स कॉल्ड अजगर वृत्ति. देयर इज अजगर वृत्ति. मेनी साधुस आर देयर हु आर लाइक अजगर. मतलब इफ समवन कम्स एंड गिव्स देम, दे विल ईट. बट इफ दे डोंट गेट, दे विल नॉट ईट. बट आप लोगों से नहीं होगा, डोंट वरी. 12 बजे तक नहीं मिला तो फिर आप लोग तांडव करने लगोगे. सो द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, यस, यदृच्छा, व्हाट कम्स विद इट्स ड्यू अकॉर्ड, उपपानेन संतुष्टो वर्तते सुखम. जो संतुष्ट रहेगा उस चीज से वो सुख पाएगा. सुख मीन्स हैप्पीनेस. अदरवाइज कितना भी कमा लो कम पड़ता है. ही इज हैप्पी. But what does he say next line? Santushto vartate sukham, asantushto tribair loker. असंतुष्ट तीनों लोकों का अगर तुम्हारे पास दुनिया है फिर भी तुम असंतुष्ट है. एक्चुअली ही वॉज हिंटिंग एट बलि महाराज. तुम्हारे पास तीनों लोक आ चुका है फिर भी तुम अश्वमेध यज्ञ क्यों कर रहे हैं? Because he wanted Indra's post officially. By power he had covered the demigod's land, that is heaven he had conquered. But now he wanted to become Indra as per the rituals. That is why he was doing that. अश्वमेध यज्ञ करने वाला व्यक्ति ही बन सकता है. So he was doing that method. So that is why he says, okay, असंतुष्टो त्रिभेर लोके अजित आत्मा उपसादितेर. अगर आत्मा के ऊपर, अगर अपनी इच्छाओं के ऊपर आपने जीत नहीं रखा है तो तीनों लोक मिलने के बाद भी व्यक्ति असंतुष्ट है. तो असंतुष्ट व्यक्ति कैसे सुखी हो सकते हैं? हाउ कैन ही बी हैप्पी? Yes, so we go to the next important verse. Evam prasanna manoso. What does the last line in the earlier verses? Suprasidati. He is in established in happiness. Then the next verse. Evam prasanna manoso. Bhagavad bhakti yogataha. Bhagavad tattva vijnanam mukta sangasya jayate. Chigar bro, please read the translation. Thus established in the mode of unalloyed goodness, the man whose mind has been enlivened by contact with the devotional service of the Lord gains positive scientific knowledge of the personality of the Godhead in the stage of liberation from all material association. Very important verse for all of us. Now let's go back to the stages. पहले आपने क्या किया? भगवान की कथा सुनी. Then all the dirt started getting cleansed. Then you moved from rajas and tamas bhava to satoguna. ये पूरा chemistry बता रहा है how the reaction is going to take place. After that, when you are situated in goodness, you are suprasidati, you are in happiness. Acha, in happiness, what you are going to do? That is when you are established in the mode of unalloyed goodness. The man whose mind has been enlived
by the contact with devotional service. दो चीज हो गया है. He is come in goodness plus devotional service. Shunvatam, that is the first part of devotion. कैसा है? श्रवणम, श्रावणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साक्ष्यम, आत्मनिवेदनम. So all these stages start. श्रृण्वताम से स्टार्ट हो जाता है आपको. तो he gains positive scientific knowledge. Here the word is भागवत तत्व विज्ञानम. He gets the तत्व का ज्ञान मिल जाता है उस व्यक्ति को. He gets भागवत तत्व ज्ञानम मुक्त संगस्य जायते. What does this mean? मुक्त संगस्य जायते. He is relieved of all material associations. Now, what is this material associations? What are these material associations? Tell me. You have asked me a question, I have asked you a question. You are looking at me. Come on, you tell. You all are supposed to say. What are these material associations? Social bindings. Yes, and very then, good. Karma kand. Now, Karma Kand doesn't come in this. Karma Kand is actually, see, Prabhu, Karma Kand is like, to understand a Karma Kand, I'll tell you a very nice example. You will understand what is Karma Kand. Now, suppose there's a small child, 1 साल 2 साल वाला बच्चा है. Now, he doesn't, he's got fever. He has got high fever. तो आजकल तो अच्छा है, शुगर कोटेड टैबलेट सब आ गए हैं. या तो व्हाट वी जनरली डू इज वी पाउडर 1 टैबलेट एंड देन मिक्स इट विद हनी. वी मिक्स इट विद हनी. और पहले जमाने में गुडिच और ये होता था, यू नो व्हाट इज दैट, गुडिच देते थे और गिलोई. गुडिच एंड गिलोई ज़्यादा करके माँ उसको, दैट एक्चुअली गिलोई इज सपोज्ड टू बी एंटीपाराइट. सो उसको घस के, कड़वा, एकदम कड़वा, बच्चा देख के खाएगा नहीं, पिएगा नहीं. तो क्या करेंगे? हाउ विल यू गिव टू द चाइल्ड? तो माँ कहती है, ये देख, ये रहा लड्डू. बच्चा बोले हाँ लड्डू दो. पर लड्डू नहीं दूंगी, या लड्डू दूंगी तो कब दूंगी? तो पहले ये दवाई पी ले, देन आई विल गिव यू द लड्डू. सो हाउ डू यू अंडरस्टैंड? दिस इज कर्मकांड. कर्मकांड, हाँ प्रभु जी, सोमवार नॉनवेज छोड़ दिया, मंगलवार को दारू छोड़ दिया, बुधवार को ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, सब छोड़ दिया. सब दोस्त लोग दारू पी रहे हैं, मैं नहीं पी रहा हूँ प्रभु जी, क्या करूं, गले में माला बांध दिया, ये वो. बट क्यों कर रहा है? एक लड्डू पाने के लिए. लाइक द चाइल्ड हु ड्रिंक्स द kadwa medicine, that bitter medicine, he takes the bitter medicine, but in the end दोनों का काम पूरा हो गया. Mother is also happy, the child is also happy. When the mother is happy, चलो अंदर दवाई गई है, 4 घंटे में बुखार, and the child is also happy, चलो थोड़ा कड़वा पी लिया तो क्या हुआ, लड्डू तो मिला. So it's a win-win situation for both. This is karma kand. Karma kand is never a loss-loss situation, it's completely win-win situation. But the problem is in karma kand, people just get stuck to laddus. That is the problem. उसके आगे एक स्टेप आगे सोचते नहीं है. They don't think of going ahead. What I can do or what I should, what I can achieve more by devotional service. So devotional service is there only done because there they will do 16 Somvar, 16 Shukravar and all this vrat. But that is only for one laddu. लड्डू का फायदा क्या है? एक बार खा लिया, मीठा लगा, बाद में क्या, फिर और एक लड्डू के लिए और एक व्रत चालू करो, और एक इसके लिए खाओ. It is like this. So never bring that into mukta sangha se jayate. That's the first step. ऐसे बच्चा तो दवाई पिएगा नहीं, तो बच्चे को खिलाने के लिए वो लड्डू दिया जाता है. It's like that. Yes, anybody else? First you said, what was the reason you said? First is material, social, material. Yes. That is the first and the most prime problem with in general. कि अगर रेगुलरली सैटरडे इवनिंग यहाँ आने लगे तो आपका पड़ोसी, आपका फ्रेंड, आपका दोस्त बोलेगा पागल है. Every Saturday you are going and sitting and listening to that bald man. What are you doing? You don't know how to enjoy life. महीने में सिर्फ 4 सैटरडे होते हैं और चारों तू वहाँ निकाल देगी तो कैसा चलेगा?
तो यहाँ आ जाओ, लेट्स पार्टी, लेट्स एंजॉय। हमारे ग्रुप में से एक व्यक्ति पार्टी करने गया था मनाली, वो जोरदार पार्टी करने गया, फिर माया देवी ने ऐसा उसको चपेटे पे लिया, पटक पटक के मारा है उसको। ना ठीक से खाया, ना खुद ठीक से सोया, ना ठीक से कुछ किया, हाँ, खुशी पाने की जगह पे गम लेके आया। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट माया देवी इज वेरी स्ट्रॉन्ग। द मिनट यू वांट टू डिजायर फॉर सम मटेरियल हैप्पीनेस ना, माया देवी बोलेगा आ जाओ। एंड माया देवी स्पेशलिटी क्या मालूम है? इट विल गिव यू इनफ हैप्पीनेस दैट यू विल गेट स्टक टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। इट विल गिव यू इनफ हैप्पीनेस, दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ माया। इट इज लाइक नो, एक बहुत पुराना डायलॉग था जब मैं कॉलेज में था, सुनते थे हम लोग। विलन का एक डायलॉग था, मोना, हाँ, लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो उसको, लिक्विड उसे जीने नहीं देगा और ऑक्सीजन उसे मरने नहीं देगा। इट इज लाइक दैट, दैट इज माया देवी, दैट इज माया देवी। अजीत का डायलॉग हुआ करता था, अजीत का, हाँ रख दो तो। अजीत का डायलॉग हुआ करता था, you know, it's like material world will give you one thing, hope, that tomorrow you are going to be blissful. Everyone who goes to sleep gets up in the morning, next day morning he thinks, yes, tomorrow I'm going to be blissful, but that tomorrow never comes. And next day morning, but yesterday was better, today is still worst. This is how the material world is. So when you get disassociated with your material way of enjoyment, see, association doesn't mean, now we are talking of devotee association, that is also association. But what happens when you're devotee association, a true devotee association? What is the exact definition of association? What is the definite exact meaning of association? हाँ, ट्रांसलेशन नहीं पूछा, अंडरस्टैंडिंग पूछा। हाँ, समझना क्या है, इसमें बहुत समझने वाली बातें हैं। याद रखना, एसोसिएशन डजंट मीन जस्ट मीटिंग अ डिवोटी। इट इज सेड a कनिष्ठ अधिकारी should associate with the मध्यम अधिकारी, a मध्यम अधिकारी should associate with the उत्तम अधिकारी। Simple. Let's come to simple material world. You know, let's say local area manager hai, he wants to associate with zonal managers. Why? Then he can get promoted and he can come up in life. Zonal managers, he will look into country head, wo level pe. That is how one progresses. Now, if the zonal manager keeps a association with, you know, vendors or, you know, lower level, don't misunderstand me, I'm giving a vague example, but the point of what I'm trying to say is, if a kanishta adhikari or a lower neophyte associates with the neophyte, is there going to be any productive improvement होगा? हाँ, जैसे एक 2 राउंड चैंट करने वाला व्यक्ति, दूसरा 3 राउंड चैंट करने वाला व्यक्ति, अगर ये 2 जन मिल गए, अच्छी दोस्ती, एसोसिएट, अरे तू भी डिवोटी मैं भी डिवोटी, तू भी तिलक डालता है मैं भी तिलक डालता है, तू भी चैंट नहीं करता है मैं भी चैंट नहीं करता, वेरी नाइस कंप है, नाइस जोड़ी, तो क्या होगा, क्या बढ़ेगा? काय का बढ़ेगा? वो उल्टा 3 वाला भी 2 पे आ जाएगा। He has to associate with the person who is chanting at least 10 rounds, and 10 rounds वाला 16 rounds के साथ associate करना है। I'm just giving you a very basic understanding. You have to associate, one should associate with the person who is in a higher strata, or a higher strata of devotion, higher step of devotion. That is association. हाँ प्रभु जी, मैं बस हम लोग सब एक जैसे, एक ही बोलते हैं, एक ही पर के बख्शी हैं हम लोग, नहीं, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर, हाँ, एक ही थाली के चट्टे बट्टे नहीं चलेगा। That is association means what? There should always be a competition, a race. Let me do something more, better devotional service. Like in material world also, you know, like you 95% ला रहा है, I'll get 98%. वो 98 ला रहा है, I'll get 99%. Challenge रहता है ना. There's always next exam I'll score better. Why don't we get in the same policy over here? यहाँ पे बड़े शांत हो जाते हैं.
Why not we have this competition? Let me do some better devotional service than others. That should be the. So mukta sangasya jayati, that you have to get free. मुक्त होना है उन लोगों से. एंड मुक्त होने का क्या फायदा है ये आपको नेक्स्ट वर्स बताएगा. विद्यते हृदय ग्रंथि छिंदन्ते सर्व संशया क्षीयन्तेश्च कर्माणि दृष्ट्वा एव आत्मनि ईश्वरे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Yes, Samrat Prabhu, read the translation. Thus the knot in the heart is pierced, and all misgivings are cut to pieces. The chain of fruitive actions is terminated when one sees the self as master. So what does this, can you explain? The knots in the hearts are pierced. विद्यते हृदय ग्रंथि. हमारे हृदय में ना ग्रंथि है. ग्रंथि मीन्स मतलब मांझा गुच्छा हो जाता है, धागे का मतलब एंटैंगल्ड गुच्छा हो जाता है. सो लाइक वन धागा यू पुल द अदर धागा गेट्स मोर टाइटेंड, you get disgusted. छोड़, no, you leave it. So it is like that as a heart. क्या उसको क्यों ऊपर लिया? जिंदगी में अपना प्रॉब्लम ज्यादा करके है ना, दूसरे को क्यों ऊपर लिया? दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. मुझे क्यों ऊपर नहीं लिया वो उसका प्रॉब्लम नहीं है. बट द प्रॉब्लम इज why others are progressing, I am not progressing. So there is a knot of all misgivings, misunderstandings and unwanted thinking. काम, क्रोध, लोभ, and all is integrated. काम ही है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है. everything is like गुच्छी हो गई है पूरा. So what happens with this? When you get freed from misgivings, then vidyate hriday granthi shindante sarva samshaya. Sare doubts, all these things, misgivings are cleared off. They are cut into pieces. Then shiyantescha karmani. अभी से आप कर्म के चक्कर में फंसना बंद हो जाता है. You stop getting entangled in the कर्म का cycle. Fruit नहीं, any activity is going to give you some fruit. Now at least you will get out of good karmas and bad karmas का चक्कर. You will start going into अकर्मा. भक्ति में जो कर्म करते हो वो अकर्म है. कर्म, अकर्म, विकर्म तीन है, बहुत खतरनाक है. कर्म आपको स्वर्ग लेके जाएगा. कर्म मतलब अच्छे कर्म आपको कहां लेके जाएगा? स्वर्ग लेके जाएगा. बुरे कर्म आपको नरक लेके जाएगा. दोनों परमानेंट नहीं. सुख का जब आपके अच्छे कर्म पूरे हो जाते हैं, स्वर्ग से वापस यहीं आना है. और आपके जब आप काफी पिटाई हो गई, काफी तल के हो गया, सब हो गया नरक में, फिर आपको कहां आना है? वापस यहीं पे आना है. एंड ये जब दोनों हो गया, वापस क्या? नए कर्म बनाओ. वापस या तो गो टू स्वर्ग और गो टू नरक टू एंजॉय और टू सफर. थर्ड इज अकर्मा, which is doesn't give you neither good karmas neither bad karmas. ना स्वर्ग मिलेगा ना नरक मिलेगा. और अकर्म करने से क्या फायदा है? You will go back to Godhead. You don't have to suffer the cycle of birth and death. कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं प्रभु जी अच्छा है, बच्चे पोतों के साथ अच्छा रहता हूँ, जीवन भर रहता हूँ. See, that is the speciality of devotion service. You can stay happily with your family. In a grahastha ashram, you can stay happily with your family. But one focus should be very clear. Ki I am not going to get entangled in this. Perform your duties as a father, as a husband, as a wife, as a mother, as a daughter-in-law. Whatever your duties are, please perform them. But that should not be the only goal of your life. Then the most important thing, Drishtva eva atmani ishware. Prabhupada writes in the purport in this, you can shake hands with God. From that stage you can shake hands with God. So how many of you are planning to shake hands with God? Only one person. Everybody wants. So how is it possible? क्या और 100 years वेट करना पड़ेगा? कैसे पॉसिबल है? दृष्टवा एव आत्मनि ईश्वरे. हाउ कैन वी सी गॉड? दृष्टवा मीन्स टू सी. तो भगवान को कैसे देखेंगे? हाउ विल यू सी गॉड? बोलिए. By following this 5 steps. शुद्ध सत्व में आके वो स्टेज.
भगवद गीता में एक श्लोक है जिसमें कृष्ण ने सन को एज हिज आईज, मून को एज हिज आईज, दैट इज विश्वरूप कहा दिया है उन्होंने. सन एंड मून्स आर माई आईज. then he says that the warmth in the fire is me, असो हम अपसी कौंतेय सदा प्रभा अस्मि शशि सूर्य हो, वो सब ठीक है. बट हाउ डू यू सी गॉड? तो मुझे अहंकार की जो लॉट है उसको Prabhuji, can I try? Prabhuji, it seems that now you start living in the soul consciousness rather than the bodily consciousness. Okay, something more than that. Lotus feet. I mean, I think no. मतलब अभी आप लोग नीचे जाके क्या एक्सरसाइज करके आए? नहीं, अभी नीचे आप लोग कुछ दर्शन करके आए ना आप लोग? कितने जन ने दर्शन किया? सबने दर्शन किया. भगवान को नहीं देखा? पत्थर को देख के आए? हाँ, आप अगर उसमें जड़ पदार्थ को ढूंढोगे तो जड़ पदार्थ ही मिलेगा. इफ यू आर गोइंग टू सी सम वुड, मेटल और स्टोन, दैट इज व्हाट यू विल सी. Whereas all these archa vigrahas are actual God himself. You need divine eyes. Now what is that divine eyes? भगवान कहते हैं ना भगवद गीता में 11th chapter में, when Arjuna asked for seeing the universal form, that time God says, Arjuna, take दिव्य दृष्टि ले लो और मुझे देखो. तो what does that mean? क्या इसका मतलब क्या है? एक बार, नहीं आप लोगों को स्टोरी सुनाऊंगा तो समझ में आए. एक बार राजा ने एक अनाउंसमेंट किया, विच इज द मोस्ट ब्यूटिफुल चाइल्ड इन माई किंगडम, आई वॉन्ट टू गिव अ प्राइज. तो सब लोग अपना बेटा, बच्चा, पोता, पोती सबको लेके, मेरा बच्चा सबसे खूबसूरत है, मेरा बच्चा सबसे खूबसूरत है. तो एंड में एक मैया आई, बोला महाराज आज तक आपने कोई ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा रहेगा, माई चाइल्ड इज द मोस्ट ब्यूटिफुल चाइल्ड. जब देखा, काला कलूटा, मुख से ये बह रहा है, हॉरिबल लुकिंग, थोड़ा चखना, ये वो एवरीथिंग. माय गॉड, किंग सेड, दिस यू आर कॉलिंग द मोस्ट हैंडसम ब्यूटिफुल चाइल्ड ऑफ द किंगडम. देन शी सेड, राजा, डोंट सी इट फ्रॉम द आई ऑफ अ जज, see it from my eyes. When you see from my eyes, you will find this child is the most beautiful child. Similarly, when we see Lord through the eyes of devotees, through the eyes of devotion, or rather through Lord's eyes, then you can see everything clearly. Otherwise, everything will look as jada vastu, something inanimate. That's the first thing you all should have faith when you go to take darshan in the temple. Yes, this is the actual Lord. This is the actual Lord who is standing, and I can actually see the Lord the way he is standing in front of me. ठीक है, देख लिया. क्या ब्रेसलेट था भगवान का आज? भगवान का आज ब्रेसलेट कौन सा कलर का था? ब्रेसलेट कपड़े तो देखे मैंने. वो तो कपड़ा, मेरा कपड़ा. जैसे नवरात्रि में सारे आज कौन सा कलर के पहनना है, भगवान गया बाजू में, हाँ कौन से कपड़े रंग का कपड़ा का पहनना है वो इंपॉर्टेंट रहता है. दैट्स द प्रॉब्लम. वी हैव मेस्ड अप द एंटायर डिवोशन प्रोसेस. ये प्रॉब्लम. टुडे लॉर्ड वाज वेयरिंग अ नाइस फ्लावर ब्रेसलेट. दर्शन करना है तो इसको कहना कि हृदय में उस पूरी छवि को उतार लो. That's the way it is. That is how you can see Lord. I'll tell you, in Bhaktamal, Nabaji's Bhaktamal is a very nice story of Archa Vigraha. There's a very nice story of Singh in Bhaktamal, where Lord talks about where is a very nice mention about
कुंभन दास जी. कुंभन दास जी वॉज अ वेरी नाइस. आज भी अगर याद है हम लोग चंद्र सरोवर गए थे, हाँ, जहाँ पे चंद्रमा की थाली जैसी थी राउंड चंद्र सरोवर, यहाँ पे हम लोग भोजन भी लिए थे हम लोग ने. उसके पीछे कुंभन दास जी का वहाँ पे खेत आज भी है उनका. ही वॉज अ रिच ब्राह्मण, मतलब लैंड एंड प्रॉपर्टी एंड ऑल. तो कुंभन दास जी का वो जगह था. अभी क्योंकि प्रभु जी ने वो पहुंचने ने हमें लिटरली पुश किया, राम जी के दरबार तक तो जाने ही नहीं दिया, हमारे में से आकर जल्दी आया करो. तो 1 घंटा लगा. हाँ, I know. तो the point was, Kumban Das ji, he was such a nice devotee that Lord used to always interact with him. So once Kumban Das ji was sleeping in the night, and daily one gopi used to come and play to Krishna. कभी तो मेरे घर पे आओ माखन चोरी करने के लिए, कभी तो आओ मेरे घर पे माखन चोरी करने के लिए. तो कृष्णा डिसाइड किया आज जाके माखन चोरी करूंगा गोपी के घर पे. सो व्हाट ही डिड, ही वोक अप कुंभन दास जी. चलो उठो उठो. कुंभन दास जी क्या हो गया, व्हाई आर यू वेकिंग मी अप? नहीं चलो चलो लेट्स गो ऑन अ नाइस मिशन. मिशन चोरी, ठीक है, चोरी मिशन पे जाते हैं. हाँ ठीक है. तो चोरी करे, चोरी मुझे आता नहीं, मैं कभी किया नहीं. कृष्णा से डोंट वरी, मैं इसका आचार्य हूँ, इसका तो मैं आचार्य हूँ, मैं स्पेशलिटी है मेरा, तो आई एम एक्सपर्ट, आई विल ट्रेन यू, डोंट वरी. करना क्या है, कब चुप जाना है, मैं बोलूँगा वैसे करना है, चोरी करके आ जाए. क्या है, वो गोपी का घर पे माखन बहुत अच्छा है बेचारी, बिकॉज गोपी वॉज प्लीडिंग लॉर्ड कि भैया भगवान आप आइए थोड़ा माखन चोरी करिए. तो लॉर्ड वेन एवर यू आस्क लायर. कितने लोग बोलते हैं सर? कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि हम लोग क्या, अभी भी हम लोग अपना 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 अपना. But that is what makes Vrindavan special from other places, where the people of Vrindavan are always ready to give to the Lord everything. That is why Lord is a servant over there. जाते हैं एक कटोरी छाछ के लिए नाचते हैं भगवान. Who is the creator of all the Brahmanda dances for one कटोरी छाछ. कोई वो भी बोलती है एक छाछ की कटोरी चाहिए, हाँ हाँ कृष्ण बोलते हैं छाछ की कटोरी चाहिए. नाचो, कृष्ण नाचते हैं, और नाचने के बाद क्या मिलता है, एक कटोरी छाछ. बट ही इज नॉट डांसिंग फॉर द छाछ, ही इज डांसिंग फॉर द लव ऑफ द डिवोटीज. सो कुंभन दास जी से ठीक है, अभी मैं बूढ़ा हूं, आई कांट डू ऑल दैट. नहीं चलो चलो, यू विल डू इट, यू कम विथ मी, वी विल डू इट. सो कुंभन दास जी वेंट, दोनों गए चोरी करने. कैसे वैसे मेरे कुंभन दास जी के कंधे पे भगवान खड़े हुए, दीवार चढ़े, फिर दीवार पे चढ़ने के बाद कुंभन दास जी को उठाया, फिर कुंभन दास जी को उतारा, फिर वो उनके वापस कंधे पे बैठ के नीचे उतरे. एंड ही वॉज अ वेरी रेस्पेक्टेड पर्सन इन द विलेज. ओके, किसी भी तरह घर के अंदर घुसे, जहाँ मटकी थी वहाँ गए, आवाज मत करना, गपचुप गए. कुंभन दास जी के कंधे पे चढ़ के ऊपर चढ़ गए, अपना बांसुरी अपना धोती पे सर घुसा दिया. एंड देन ही स्टार्टेड स्टीलिंग द बटर, एंड ही टुक द बटर, एंड देन ही सेड कुंभन दास जी कम ऑन टेक दिस बटर. एंड कुंभन दास जी वाज लाइक really engrossed in the leela, was literally happy, and आंखों में से आंसू आ रहे हैं कि भाई कृष्ण is on my shoulder and he is taking the माखन and eating. So nice लीला is happening. वाह कृष्ण भगवान ये वो. तो खा रहे हैं, दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं. अब एक हाथ में मटका और एक हाथ में मक्खन. इतने में क्या हुआ, धोती ढीली हो गई. धोती ढीली हो गई कृष्ण की धोती ढीली हो गई. एंड ही इज गोइंग टू द दिगंबर फॉर्म ऑल्सो. स्लोली हिज धोती इज फॉलिंग डाउन. सो ही डजंट नो व्हाट टू डू. एंड कुंभन दास जी स्टार्टेड सिंगिंग एंड लाफिंग. अरे उनकी तो धोती उतर रही है, नीचे उतर रही है, व्हाट विल ही डू? सडनली लॉर्ड, 2 more hands came out, चतुर्भुज रूप में आ गए, एंड 2 हाथ से धोती पकड़ ली. और धोती पकड़े कैसे, बच्चे की तरह पकड़ के खींच रहे, ऊपर पकड़ के खींच रहे. लाइक ये भाव विभोर हो गए एकदम.
literally engrossed in the looking at the activities of the Lord. He was engrossed. Then Krishna told him, take, I'll give you the pot. And now the pot was touched with butter. It was already slippery. He took the pot, but he could not hold it. It fell down. Dham! The noise came, big noise came, and then butter was swayed down. इतने में पूरे घर वाले उठ गए. अरे कौन आया, घर पे आवाज आई है, कोई तो चोर आया, देखो कौन चोर है. And they immediately lighted the diya, लगा के देखा. By the time all this could happen, 2 मिनट में jump, skip, hop, खत्म, भगवान भाग गए. Jump from the shoulder, hop, jump, ran away. Kumandas ji caught red-handed. He's red-handed standing there. यहाँ पे भगवान गांव वाले घर वाले आ गए, गोपी आ गई और बाकी के लोग आ गए. देखा कुमंदास जी आप, बोला मैं. अच्छा बोलेगा क्या, प्रूफ क्या है कि भगवान आए थे चोरी करने के लिए. He is plumb in front of the wicket. He doesn't know what to do. That he was a respectable personality. So that ठीक है आप गए, अब जाइए आप, ठीक, you go. So कुमंदास जी left. बाहर आके थोड़ा बाहर आया, देखा कृष्ण बैठा है झाड़ के ऊपर. क्या हो गया? You ditched me, you just ran away like that. See, first and foremost, कभी चोरी में भाव विभोर होना नहीं चाहिए. This is the first training. You should never get engrossed in emotions in chori. Second, see, a good driver is one, जब तक 2 बार गाड़ी ठोकता नहीं ना, परफेक्ट ड्राइवर बनता नहीं. जब तक 2-4 बार ऐसे पकड़े नहीं जाओगे, नेक्स्ट टाइम यू विल बिकम मोर एक्टिव. मतलब अभी तो मुझे जिंदगी में चोरी नहीं करनी है आपके साथ जाके. आई डोंट वांट टू डू एनी चोरी. बट हियर आचार्य आस्क अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाई डिड लॉर्ड hold his dhoti by producing emanating 2 more hands and held the dhoti? Why? भगवान ने क्यों ऐसा किया? Two hands came out immediately to hold the dhoti. And भगवान का धोती सरक सकता है क्या? Then चतुर्भुज में दर्शन दिए. no. He wanted to show that how much I may be as your friend, as your thing, I am still the supreme personality of Godhead. I am still the supreme. He wanted to tell him that I am the supreme, but still here I have become the most menial thief. अभी चोरी क्या कर रहे हैं? कोई लाखों का चोरी होता तो भी ठीक है. खा क्या रहे हैं? माखन. चोरी कौन सी चीज का कर रहे हैं? ही इज नॉट डूइंग वेरी कॉस्टली, महंगी चीज का चोरी नहीं कर रहे हैं. बहुत मतलब फॉर देम विलेज के लिए रोज मक्खन निकल रहा है, फॉर देम डेली, बट स्टिल वो चोरी कर रहे हैं. सो व्हाट डिड यू वांट टू से? आई एम स्टीलिंग द मोस्ट मीनियल थिंग, बट इट मे बी मीनियल फॉर द वर्ल्ड, बट इट इज एक्चुअली एज वाइट, एज सॉफ्ट एज द हार्ट ऑफ द gopis. The gopis were clear-hearted. They wanted only involve God. And the gopis wanted to surrender everything to God. Everything means everything. And this was the main thing why he showed his Chaturbhuj Roop. And because he knew very well that this is none other than God, he knew very well. Same Kumand. At the same time, yes. At the same time, Krishna is helping him in plowing the field also. And itne mein Jatipura pe, they started ringing the bell for the आरती. जैसे जतिपुरा में बेल आरती का बेल लगने लगा, कुंभन दास जी ने he released the cows or bull, and immediately he started going for आरती and singing. He was a big kirtankar, so he used to sing kirtan. He was mainly associated with Srinathji. When Srinathji was, before Srinathji could go to Nathdwara, it was he and one more friend, one of his son, चतुर्भुज दास. इसके उसी दिन उसका पुत्र पैदा हुआ था, इसके लिए उसका नाम चतुर्भुज दास रखा था. जिस दिन ये हाथ निकला और धोती पकड़ ली उन्होंने, भगवान ने, तो उसी दिन. तो what he did was,
he and his son, they both actually, I mean, this is a story told by acharyas that Lord said, I want to go from here now. क्या मलेच आ गए, मलेच आ गए, मलेच आ गए, मलेच आ गए मीन्स मुस्लिम्स आ गए, दे हैव टू बी सेव्ड. तो क्या कहेंगे, मैं यहाँ से नाथ द्वारा लेके चलो मुझे. तो लॉर्ड, बिकॉज अर्च विग्रह स्पीक. द पॉइंट इज वी हैव नेवर बिहेव्ड विद अर्च विग्रह एज एन अर्च विग्रह. वी हैव नेवर कंसिडर्ड एज अर्च विग्रह एज गॉड हिमसेल्फ. वी आर जस्ट कंसिडर, ठीक है भाई, तेरे को माखन मिश्री खिला देता हूँ या थोड़ा सा खड़ी साकर खिला देता हूँ. वी हैव नेवर ट्रीटेड हिम एज गॉड. दैट्स अ प्रॉब्लम. तो when he said मलेच आ गए, मुझे जाना है, वहाँ पे जाना है, तो what they did, they call कुंभन दास जी said, how will you go? I don't know, I want to go immediately, make arrangement. So one person had one भैंसा. तो बोला भैंसे पे बैठ के जाओगे तो क्या हो, मेरा साला साहब तो सालों से भैंसे पे जा रहा है. यमराज साला है ना, यमुना देवी से शादी किया है तो साला तो मैं भी एक बार भैंसे पे बैठ के देखता हूँ कैसे लगता है. बोला ठीक है, भैंसे पे सवारी करेंगे. तो और जैसे भैंसे पे बिठाया, ले मैं गिरा गिरा गिरा, पकड़ो पकड़ो पकड़ो. तो एक साइड पे चतुर्भुज दास और एक बाजू में कुंभन दास पकड़ के लेके गए भैंसे पे. तो काफी दूर तक लेके गए, ध्यान में बैलगाड़ी में बैठा के इट वाज टेकन टू नाथ द्वारा. तो ही यूज्ड टू डू ऑल दिस टाइप ऑफ प्ले. सी कृष्णा यूज्ड टू प्ले. सो दिस हियर, यहाँ जतिपुरा में बेल बजाने निकल गए, बैल खोल के स्टार्टेड रनिंग ओवर देयर. इमीडिएटली कृष्णा सेड, वेयर आर यू गोइंग? आई एम हियर एंड यू आर गोइंग देयर. व्हाट फॉर? व्हेन आई एम हियर, व्हाट इज द नीड फॉर यू टू गो देयर? He didn't care. Kumbhandas did not care. He just left directly to Jatipura. Did the kirtan, आरती and everything, भोग वोग लगा के आया. तो वही खेत के वहाँ बैठा है, कृष्ण बैठा है. कृष्ण बोला, why you went? I'm standing here, no? What was the need for you to go? मैं साक्षात रूप में खड़ा हूँ. What was the need for you to go and meet the arch vigrah of mine? मेरा स्टोन फॉर्म को क्यों देखने गया जाना है? पर आप लोगों को ये ऑप्शन दिया होता तो क्या करते हैं आप लोग? Would you go to meet Dwarkadish God in the arch vigrah form, or would you play with God himself? When God himself saying, let's play, let's interact, play. That what makes a Uttam Adhikari. This is what Kumbhan Das, this proves Kumbhan Das is an Uttam Adhikari. Not that way. He said, this darshan of yours is durlabh. Sakshat form is durlabh. But I want it in the surlabh form. My archa vigraha is surlabh. Very easy for me. The day I want, the way I want to dress, the way I want to feed you, the way I want to keep you, I can do. ये कभी कभार आप प्रकट होते हो. The actual form may not be every day. Sometimes you come and play with me, but in that form you are always with me. So that is why archa vigraha seva, archa vigraha puja has to be done. Very important. Near Bundelkhand, there was a lady, old lady. This I am telling you a story of around 50 years old. Okay, इंडिपेंडेंस के बाद का कहानी बता रहा हूँ मैं आपको. ऐसा नहीं कि कोई सतयुग द्वापर युग का कहानी नहीं बता. In Bundelkhand, just about few kilometers from Bundelkhand, to do very nice seva of the Lord, archa vigraha seva. Right from nalana, dhulana, khilana, everything. And lifelong she has done that. Whole life she has done the seva of the Lord. And she was old that time, and she used to go to sleep in the गांव में सब वो छत रहता है ना, छत पे जाके सोते हैं. So then they don't have this pakka staircase type thing. So one day morning she was getting up and trying to come down. Her leg slipped and she fell down and she broke her hip bone. Hip bone टूट गया उसका. Immediately they took her to Jhansi. Jhansi is the nearest hospital over there. They took her, and the grandmother, that is the old lady's grandson, was himself a doctor in the Jhansi medical hospital. तो वहाँ पे उसने arrangement किया, सब check किया.
it was broken, and she was so old that hardly anything was possible to do. So they told, take her back home, you don't keep her here, but she won't be able to walk her whole life, now she can't walk. So anyhow, they took her back to the village, and their deities were so big, it was like a temple. So it was like उनका घर और घर का मतलब एक छोटा लेन जैसा है, और सामने बड़े टेम्पल में वो विग्रह रखा हुआ था, चतुर्भुज रूप में था. सो दिस लेडी यूज्ड टू, घर पे आई एंड गांव वाले कैसे होते हैं, भगवान को कोसना चालू कर दिया उसने. भगवान को कोसना चालू, क्या, व्हाट इज दिस, आई हैव डन ऑल सेवर्स टू यू एंड यू आर डन लाइक दिस. तो बेटा बहू सब आ गई, कि तू किस विग्रह को गाली दे रही है, जिसको तूने जिंदगी भर सेवा किया उसको गाली दे रही है. हाँ मैं गाली दूंगी, मैं डांटूंगी, मैं चिल्लाऊंगी, ऐसा वैसा. वन फाइन डे, द नाइट, दिस लेडी, उसने सरक के, नाउ शी कांट वॉक, सो शी वाज, so what do you call that, खसक के, crawling is also not a right word, because you know, just pulling herself, she pulled herself and she went across the small lane. She knew where the key of the temple was kept, so many years in seva. She took the key in the night, everyone was sleeping, she went into that room, she opened the temple, went inside, and then these people, house people, were searching. Arey, this old lady is missing, where she has gone, idhar udhar dhunda. Early in the morning, around 4 o'clock, they were searching. They saw some light is burning in the temple. Who is there? Who has gone to this morning Mangala Seva? Kisi kaun gaya hai? They went there. They saw this old lady coming out, perfectly strong, fit and fine, coming out. They were all wondering, how did she become all right? They asked, yes, Maya, tell me how you became fit. Your head bone was broken and doctor said, no, how you became all right? Nee, I went inside and I fired God. तू मुझे अभी ठीक करता है या मैं तेरा टांग तोड़ू? हाँ. And she took the stone which is used for grinding the chandan. चंदन घसने वाला स्टोन था ना, वो हाथ में ले लिया उसने. बोला या तो मैं तेरी टांग तोड़ता हूं या तो तू मुझे ठीक कर. तो भगवान ने तुरंत आके उसका हाथ पकड़ लिया, बोला रहने रहे, मैं तेरे को ठीक करता हूं, मैं तुझे ठीक करता हूं. And then Lord himself came and made her, you lie down first. And then he just pressed her hip like this and she became normal. And she came out walking. She had anger. But she had anger for what? Not because she could go out for enjoyment. She had anger that she could not serve Lord after having served for so many years. And Lord reciprocated. And what she is saying, now clean the whole temple, because I have not taken bath, I have not come with after taking bath and all. So Lord has also become unclean. Abhishek karao, clean karao, sab karao. So they are doing all that. So first and foremost, if we want to expect something reciprocative from the Lord, first you reciprocate with the Lord first. Then you can expect something in return. Simple. If you have invested 10 rupees, you cannot get 1 lakh rupees. What you invest, pro rata basis, you get your investments. Similarly, in devotion also, how much you can invest in serving the Lord, that much Lord will reciprocate. Otherwise, Lord is not going to reciprocate. Lord will also say, ठीक है यार, तुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ. सैटरडे वीकेंड्स घूमने जाना है, जाओ. मैं भी जाता हूँ अपने भक्तों के घर पे. अभक्तों के साथ रहना, भक्तों के साथ रहना है. ये बहुत जरूरी चीज है. So always remember, we are always seeing God. God is there in the form of his Archa Vigraha. But as long as we are going to see it from our material eyes, as a form of a metal, stone, whatever it is. See, 24 hours, one should be concerned about the deities of the Lord. That is why first and foremost, all of you all should have some deities in your house. And deity worship is a must.
then that will always keep you connected. Like if you have someone has, like suppose, I mean generally, घर में अगर कोई बच्चा हो, तो all the members of the house, चाहे वो बूढ़े हो या बड़े हो, जो भी हो, अरे बच्चे ने खाना खाया होगा कि नहीं. Even if you are sitting in the office, you think, oh, whether child has eaten food, whether my child has slept, whether my child's health is not well, it is having fever. Now how is the child? I'm wondering about the child. बच्चे का आज एग्जाम है, क्या कैसा लिखा रहेगा. Always you are subconsciously always thinking about the child. Similarly, one should have a subconscious feeling, what is my Lord doing? Then you have drishtva eva atmani ishvare. That is the time when you can see Lord with your eyes. Otherwise, ठीक है, routine में कर दिया. It should not be a mechanical seva. The seva cannot be mechanical. Someone may say, Prabhuji, I got some problems, restrictions. I am not able to do the way in which prescribed in the books. Fine. When it is your personal deities, you can take care of them the way you want. You may not give bath to deities for months together, not a problem. Deities are so powerful, so great. And remember one thing. I should have progressed more. I'm just going against up with only one verse. But I'll tell you a small incident which is again mentioned in the Dwapar Yug, which happened. And this is about Chandrahas, Raja Chandrahas. Chandrahas was a big, actually this story happens in Kerala, in South India, Kerala. There Chandrahas was born, and unfortunately born in the king's house, some certain things happens that his father and mother die, he has to go and save himself. So he goes and his daima takes care of him and she runs away with him. She takes care of him and goes away from that place and she go into hiding. So there is another king, उसका एक minister था, दुर्बुद्धि बोल के. तो दुर्बुद्धि के वहाँ पे the Dai was staying. And there one day the Dai also died. Daima जो होती है, caretaker, whatever you call it, she also died. This king was staying there alone. But right now he was just a what you can call maid servant. He was like a maid servant. But he had devotion right from the day one in his heart. So he used to have a lot of feeling for the Lord, love for the Lord. He always used to have. So one day, it so happened that Narad Muni himself came. This is also mentioned in Bhaktamala. The story also comes in Bhaktamala. And where Navadaji very nicely says that he came and he told him, do seva of Shaligram. And he gave him a Shaligram Shila. Now, Shaligram Shila, if you see, how many of you have heard about Muktinath, Nepal? Chalo, Muktinath. The place where it comes in Nepal, when you go near that Gandaki river, just from before that, Muktinath is a higher place. Every stone is a Shaligram over there. And all Shaligrams, what you get is actually which flows through the river and comes down the Gandaki river. It comes down. And because it comes down through the river, it becomes shining, nice shining and all, and nice akritis and marks are made on the stone. And there you get small stones to big stones. It's not that, people have got a have, misunderstanding. If I got a big deity, my deity is more powerful. See, in material world, a car may be big and car may be small. But in deities, even a small deity is as powerful as a big deity. There is no size of the deity, it doesn't matter. So, our Narad Muni gave him a Saligram, small Saligram. Now, he would nicely do puja of the Saligram. How he used to do? Take some water, put it on that. Jo aaya, this whole thing, Charanamrit. And then, what is the speciality of Shaligram? Does anyone know what is the speciality of Shaligram? Have you heard about, seen Shaligram? In Guru Maharaj's room, if you go, you will see hundreds of Shaligram. What is the speciality of Shaligram?
It is like difference between paper note money and gold. This is permanent, or this is when you can say this is eternal, that is not eternal. Value wise the same. Means, let's say with 1 lakh rupees you can buy gold worth 1 lakh, and with 1 lakh gold, if you sell, you can get 1 lakh rupees. So both are same. But money has got its restrictions, in the sense it is only valued inside your country. When you go outside country, it is not valued. Whereas the gold, wherever you go, in any place of the corner of the world you go, it is valued. Similarly, here शालिग्राम, उसका कोई प्रतिष्ठा नहीं होता. You have to just take the शालिग्राम and start the puja. You don't have to do any abhishekam or pran pratishtha of that. That is the speciality of शालिग्राम. Whereas अर्चा विग्रह रहेगा, खंडित हो गया, या उसको पहले प्राण प्रतिष्ठा तो करना पड़ता है. गलती से एक उंगली भी टूट गई तो खंडित हो गई. नया मूर्ति लाओ, वापस प्राण प्रतिष्ठा करो, पूजा पाठ करो, सब करो. So it was such a Shaligram is supposed to be most powerful form of the Lord. So this boy used to keep the Shaligram, cover it up with the tulsi leaf and keep it in his mouth. There are Matajis, if you go, there are deep sadhus who keep Shaligram in their eyes. Yes. So many varieties. The thing is, the problem is we know only is this small सर्कल, अपना फ्रेंड सर्कल, बिजनेस सर्कल एंड अपना जो एरिया में सराउंडिंग, बस इतने हमको जानकारी है. हाँ, बाकी थोड़ा गूगल में, हाँ ऑस्ट्रेलिया में क्या मजा करते हैं, बाली में क्या मजा करते हैं, बस इतना हम लोग देखते हैं. बट वी डोंट नो व्हाट, सी हाउ डीप द मटेरियल वर्ल्ड इज, 3 times more deeper is the spiritual world, but we have never taken knowledge of that. So he used to keep it in his mouth and he used to play, small boy. So one day that Durbuddhi Mantri, he called for Brahmanas to eat. So and he had a nice daughter also. So he fed all the Brahmanas. And he asked the Brahmanas, please can you tell me who is the most eligible boy for my daughter? The Brahmanas ate, they saw this boy who is playing, he is going to be your daughter's husband. Now he knew Brahmana's words cannot go false, cannot go wrong. But he didn't want maidservant son, a maidservant like boy doing all the menial job, he becoming my daughter's husband. Maybe he said, we have to kill this fellow. So he called his guards, take him to the jungle and kill him. So they took him to the jungle. But there they saw this boy. They told, this young boy, 5-year-old boy, we are going to kill you. He said, you are going to kill me? Okay, fine, give me some time. Any ichha, antim ichha? Yes, yes. He removed the shaligram from his mouth, did abhishek, puja and everything. Kept it vapas in his mouth. Yes, I am ready, kill me. Why? Anyhow, one day I am going to die. I am not the body, I am the soul. That concept, see, that is what a devotee always thinks about. Okay, I am not the body, I am the soul. Second, anyhow I have to die. And jatasi dhruvam mrityu dhruvam janma mrityasya cha tasmad apariyarayarte natvam sochatam. Whoever is sure to dies is sure to take birth, and whoever takes birth is sure to die. ठीक है, मार दो. अगर मेरी जिंदगी इतनी है, मार दो. टेंशन नहीं उनको. Krishna, he was, these people were all wondering. So, by the way, for the newcomers, who are relatively new, ये मरना और जन्म हो लेना, इसमें से बाहर निकलना है अकलबंदी है ना. That's the most intelligent thing. वापस मरना, वापस जन्म लेना, वापस मरना, वापस जन्म लेना. तो that is permanent solution to the problem. उसमें भी एक बार मरना पड़ता, उसमें भी एक बार मरना तो पड़ेगा. So these people felt, no, this boy is such a nice child, such a devotional child, such a small child. We should not kill him. So what we'll do? Luckily they saw on his left leg there was an extra finger. छठा फिंगर रहता ना, छठा उंगली रहता ना. चलो इस छठा उंगली को काट के उसको दिखा देंगे, मार दिया और उसको छोड़ देंगे. They cut off his finger, they left him. जा.
तो ठीक है, वो मैं गया जाऊँ कहाँ, मैं वही बैठ गया वो, मेरा को घर बार तो है नहीं, मैं तो अनाथ हूँ, मैं इधर ही बैठ गया। और वो लोग गए, राजा को अपना मंत्री को दिखा दिया, देखो उंगली है, हाँ ये बराबर उसको उंगली है, चलो चलो खुश, प्रॉब्लम सॉल्व। एंड दिस फेलो वाज सिटिंग देयर इन द जंगल। इतने में एक राजा आया एंड ही सॉ दिस बॉय, इज wondering who is this boy. He asked him, who is this, who are you? He said, I am no one, I have nobody, I'm an orphan. The king was also did not have any child. The king said, very nice, you are an orphan, I want a child, come on, I'll take you, you're a sweet child, I'll take you. Another reason is king saw that this fellow had all the features of becoming a Chakravarti. There is another special bird, I just don't remember, I've studied much before. The special bird, a nice bird, which was opening its fans and covering it. It is said, जो व्यक्ति के ऊपर वो पक्षी अपने पंख खोल के ऐसा कवर करेगा, वो हमेशा बनेगा चक्रवर्ती राजा। इसीलिए आप लोगों ने एक वर्ड सुना रहेगा, सुरखाब के पर। एक्चुअली वो पर जो है, उसका जो फेदर है ना, वो चक्रवर्ती राजा के मुकुट पे लगता है। दैट इज वाई द वर्ड जनरल भी यूज है, क्या कौन से सुरखाब के पर। एक्चुअल द वर्ड सुरखाब मीन्स दैट पर, सुरखाब दैट पक्षी का जो फेदर है ना, उसको सुरखाब का पर बोलते हैं। एंड दैट इज पुट ऑन द क्राउन ऑफ द किंग, चक्रवर्ती किंग। So he immediately took the child, became a king, and then after his father died, this fellow became the king, and he stopped giving, what do you say, he was a small king. Main was the Chakravarti, already there was a big king, he was a small king, so he was giving taxes every year. So he said, now Chandrahas said, I will not give any taxes. Stop, I will stop giving taxes. So immediately the king said, okay Durbuddhi, go and see who is this fellow who is not giving me tax, take the army, collect the tax or destroy him. That's the general way in which the big king used to do. So the big king sent this fellow there, and there within minutes he saw the entire army was vanquished. And seeing the boy, he immediately realized that he is none other than the same boy whom I tried to kill in my earlier days. So now he was wondering what to do. So he told, you'll do one favor, I am surrendered. You are such a great personality, I have surrendered to you. You do one thing. You just can give one message to my son, because I am very old and weak now, I won't be able to reach. Can you give a message to my son? So he said, okay, I'll give a message to your son. Give me a letter, I'll give it to your son. But I want you to go personally and give it. Now we are surrendered to you, so now you are the bigger person. So once Kshatriya के हमने कोई surrender हो जाता तो Kshatriya ना नहीं बोलेगा. He writes a letter, and in that letter he writes, give him विश। ये जो द बैरर ऑफ द नोट को विश दे देना। ठीक है, राजा लेके जाता है, एंड व्हेन ही रीड्स द आउटसाइड ऑफ द जस्ट द आउटस्कर्ट्स ऑफ द प्लेस, ही सो टायर्ड ट्रैवलिंग इन द हॉर्स, ही टेक्स सम रेस्ट, एंड देयर दिस मिनिस्टर्स डॉटर, शी कम्स ओवर देयर एंड शी इज एन्चेंटेड विद द ब्यूटी ऑफ दिस पर्सन, एंड शी टेल्स हिम, wow, you're looking so handsome. And at that time we were sleeping and the letter was just dangling out. So she took out letter. She was out of curiosity, what is that letter? And it says, it is addressed to her brother, and it says, give him wish. She is telling, such a handsome person, why should my father tell him wish? There must be some mistake. Then she said, oh, my name is Vishaya. So he must have said, give her Vishaya. So what she did, she took out a nice feather, took out some kajal from her eyes and made it wish ko Vishaya kar diya. She put the letter back. She was very happy. ये लेटर लेके गया ब्रदर के पास, तो पापा ने बोला है विषया को दे दो, दे Then this fellow said, no, this is too much. When he came back, he saw that you were supposed to give him wish and you give him Vishaya. My God, what a blunder you have done. So what do I do?
Immediately he calls up his brother. He plans. He does another plan. He tells the king, Chandrahas, now his damad, I don't mind my daughter becomes a vidwa, but I don't want this fellow as my king. So he goes to an extent of planning to murder this fellow. In such a way, he tells, हमारा यहाँ एक रिवाज है, जो दामाद है वो अकेला मंदिर जाता है और देवी का मंदिर में जाके पूजा करता है, और पूजा करके आने के बाद देन ही कैन टेक माई डॉटर. तो मंत्री आ गया इतने में, तो मंत्री ने बोल दिया उसको. ही सेड ओके, अगर रिवाज है तो मैं करूँगा. ही गोस. यहाँ पे उसने मंदिर में ऑलरेडी कुछ प्लान्ड गुंडे रख दिए थे उसको मारने के लिए. एंड उसने बोला निहत्था जाना है तुमको, कुछ अस्त्र शस्त्र लेके नहीं जाना है. जा रहा था, इतने में यहाँ पे एक और एक डेवलपमेंट हो गया कि व्हेन द किंग केम टू नो दैट हिज आर्मी वाज डिफीटेड बाय चंद्रहासा, ही सेड नाउ द रूल वाज जनरली द किंग व्हेनेवर ही फाइंड्स अ बेटर पर्सन ही गिव्स हिज डॉटर इन हिज हैंड. सो इमीडिएटली ही गिव हिज डॉटर इन हिज हैंड. ही सेड नाउ आई वांट टू गिव माय डॉटर, सो कॉल चंद्रहासा, उसको मेरी बेटी दे देता हूँ. Now, because for him it's a prestige issue, he cannot become now a Chakravarti because he has already been defeated. So at least मेरी बेटी को चक्रवर्ती को दे दिया तो मैं ससुर बन गया. So it's a political game actually. So ये गया वहाँ पे, तो इसको बुलाया, तो ये न्यूज़ मिला उसके भाई को, विषया का भाई को, कि भाई तुम्हारे जीजा जी को बुलाया गया है. तो Chandras was going. He said, no, Chandras ji bola. Then don't go, directly go to the king, meet the king, that is Chakravarti, who wants to give his daughter to you. And he was very proud that my Jija is going to become the Chakravarti. I will go for you to the temple. So he went. क्या हिंदी पिक्चर में हिचा कर रहे ऐसा कर रहे तू ना. I'll go for the do the puja on your behalf. I'll do the puja. You go. Hurry, Chakravarti is calling. Go. So he made left. This fellow went to the thing, and there definitely was. उसने बोल के रखा था जो भी आएगा उसको मार देना. वो आया, उसको मार दिया. मंत्री वापस सिर पे हाथ रख के बैठ गया. गया वहाँ पे देखा बेटा मरा हुआ है, बेटी गई. What else more? वहीं सर पटक पटक के जान दे दिया. When Chandras came to know about all this, that time he prayed to the Archa Vigraha that whatever it is, my father-in-law is like a father to me. Technically, he is like a father. So I have to take care of him. So please restore his life. And these people, please restore back life of my brother also, my wife's brother, and this thing. So Lord himself came and restored both of them's life. So Archa Vigraha has got lot. This is Dwapar Yug story. This is not Treta ya Kal Yug. This is Dwapar Yug story. I am telling you this comes specifically like that. But please try to understand कि जितना भी हो सके, please follow Archa Vigraha. So you are actually seeing God as He is. The way you can want Him, you can serve Him. You can't go to the temple and serve Him the way you want to serve. Whereas there, you can do the service. You are able to maintain your cleanliness to the highest level, fine. Little lower, you should have, of course, you should be a human being first, following the 4 regulative principles. And of course, avoiding onion and garlic should not be eaten and all those things. We should be free from that. At least you should be in Satogun. So these activities are of Satogun. That is why here this verse clearly states, okay, one who is in the form of, in the Satogun, he is Prasidati, then Bindate Hridayante Samshaya, he cuts off all the knots and clears off all his doubts. And then, when he has cleared off all the knots and all the granthis in the heart, he is able to see the Lord as He is. Okay, one more verse we'll take and then we'll. Question, don't you उसको लिखा है ना कि you become the master of yourself. तो वो समझ में नहीं. आत्मनि ईश्वर है. आत्मा का ईश्वर कौन है? आत्मा. ईश्वर कौन है? Who is the owner of the Atma? One sees self as master. Self as master. Then you become one with God, no? You realize your actual Swarupa. What is your actual Swarupa? You are a 400 form. Right now moving on for a 200 form.
But when the spiritual form of yours comes out, it will be so next verse 1.2.22. Certainly, therefore, since time immemorial, all transcendentalists have been rendering devotional service to Lord Krishna, the personality of Godhead, with great delight, because such devotional service is enlivening for the self, to the self. It is very much enlivening for the self. The transcendental personality of Godhead is indirectly associated with the three modes of material nature, namely passion, goodness, and ignorance. But just for the material words creation, maintenance, destruction, he accepts the three qualities in the form of Brahma, Vishnu, and Shiva. Of these three, all human beings can derive ultimate benefit from Vishnu, the form of quality of goodness. Now you have to understand this. Now, how come God is the creator of the three modes, but still he is away from the three modes? How do we understand that? He is in the three modes, but still he is away from the three modes. Lord says in the Bhagavad Gita also, कि मैं तीनों गुणों का, I have created the three guna, but I am above the three modes. How will you understand that? Yes. Simple. Suppose you are a jailer. Where will you stay? Have you done any crime? जेल के अंदर ही ना, अंदर ही. I was once had gone once to meet the jailer of Arthur Road jail because he was my neighbor. He's still my neighbor. One of my other flats, he was my neighbor. So सामने रहते हैं. So he was earlier in Yerwada, and then he came over here. Then we went inside this house. We had to go to see Lal Bagcha Ganpati. I'm talking way back in 2008, 9, 10 के आसपास. So we wanted to go to see Lal Bagcha Raja. So they said, नहीं आप आइए, we will take care. Of course, VIP jailer of Yerwada means he is coming in the higher level, ACP level पे आता है. तो he was an ACP. तो उसके वहाँ गए थे. तो उनका रूम, it was inside the barracks. When you enter, left side में barracks के अंदर था. We got to climb the staircase, go up first floor, big palatial room and all this palatial, but all the British construction type thing. And who was cooking? I said, we'll have some food. I said, what food? Who is going to cook? Because his wife stays there in the neighbor. So who is going to cook? No, one Kaidi is going to cook. The Kaidi is cooking. ठीक है, बोला चलो कैदी कुक कर रहे. फिर देखा, then he called up the his assistants, बोला इनको लेके जाओ और लाल बाग दर्शन करा के लेके आओ. ठीक है. Then one lady constable came. She took care of my wife. She was holding as if she is a thief. Holding her tight. And literally, because that is a habit, na. किसी को भी पकड़ा हो, he got my wife like a thief, with due respect and love, but I mean the grip was such. And then we had a special direct entry, we went, did darshan, we came, ठीक है, all given said. Then I was wondering, what a life he is having. Whole life, he has to spend only with prisoners. But one freedom he has got. He can go in and come out whenever he wants. But a prisoner cannot do that. Okay. He is inside the prison, but he is not eating the prisoner's food. He is not eating the prisoner's food. He is eating something special for himself. He used to come and stay in his house. Weekend, he used to come for 2 days, 3 days. He used to come. So, what I mean to say is, this is how we understand. The Lord is inside this prison and at the same time outside. He is not bound by the laws, which is for the prisoners there is some law, but for outsiders there is no law. There is people who are working staff, for them there is no law. Similarly, you have to understand this. So this is how we have to understand that Krishna is always merciful. So let us understand that Lord can be seen in all transcendental forms like Brahma, Vishnu and Mahesh. But what does this last line say? All human beings can derive ultimate benefit from Vishnu, the form of quality of
goodness. So if you want to achieve God, you have to come out of tamogun and rajogun and get situated in satogun, and you all will have to do some archa vigraha seva to see Lord 24 hours. Hare Krishna. So with this I like to close our class today. Any doubts, questions anybody is having can ask. Anybody has got any doubts, questions?